हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज़ और ये हम करेंगे विद ताबीर अकेडमी। वील स्टार्ट विद लीनियर इक्वेशंस विद वन अननोन वेरिएबल। तो अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर वी हैव वन अननोन वेरिएबल, तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं विच इज़ ए एक्स इक्वल्स टू बी। हियर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट एंड एक्स इज़ द वेरिएबल। और अगर a इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो तो इस इक्वेशन का एक यूनिक सोल्यूशन है विच इज़ x इक्वल्स टू b ओवर a। Then if we have an equation with two unknown variables, so उसको हम फॉर्म में लिख सकते हैं which is ax plus by equals to c. इस equation में a, b and c are real numbers and we also assume that a and b are not zero. Then a solution of a linear equation consists of a pair of number. For example, u, in which the first item is k1 and the second item is k2. This is for an equation with two unknown variables of the form ax plus by is equals to c. Then if we substitute the values k1 and k2 into the equation, this gives us a k1 plus b k2 equals to c. This solution can be found by assigning arbitrary values to x and solving for y, or assigning arbitrary values to y and then solving for x. अगर हम ज्योमेट्रिकली इसको देखें तो एनी सोल्यूशन वेयर u is equals to k1 or k2 of the linear equation lies on the Cartesian plane and these are points on the straight line.